वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सोल इन माई सूटकेस। अब तक आपने देखा केरी बीच, तेराकोल फोर्ट, रेड्डी फोर्ट और कई सारे स्टनिंग से लोकेशंस, लेकिन अब भी आई वॉज नॉट डन विद गोवा। सो हियर वी आर शोइंग यू गोवा थ्रू माई आईज, समथिंग अनएक्सप्लोर्ड, something fun and something that you have to pack your bags for. मुझे पता था कि मैं जब गोवा जाऊंगी तो मैं कीकी तो जरूर जाऊंगी। कीकी वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स है जो नॉर्थ गोवा में सिचुएटेड है बाय द सी। तो अगर आपको एक सनडाउनर का ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो कीकी जरूर जाइएगा। वहाँ का खाना, वहाँ के ड्रिंक्स, शीशा अगर आप करते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। द इंटीरियर्स, द फील, द वाइब इज समथिंग दैट यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस। I love the live performances there, and the food and the hospitality just comes together beautifully for a holiday. You know, the moment I got out of Kiki, Jaden was looking at me because उसको पता था मैं क्या करने वाली हूँ, शॉपिंग। तो हम बिल्कुल across the street एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स और बहुत ही प्यारी सी शॉप। मैं वहाँ गई और वहाँ पे I was really amazed. The prices were nothing more than 100 to start with, and it ended between 1000 2000 max. The variety, the style, everything was so amazing. I ended up doing a little bit more than I thought, but the shopping was worth it. The experience was worth it. खामोशियों में जी लिए, अब आदतें सुधार ली। गुफ्तगू है हर तरफ, कोई सुन रहा पुकार से। You know, one of my favorite evenings in Goa was the Torda Creek walk. Oh my God, what a beautiful evening. You know, अगर आप half as depressed and half as stressed हैं जितनी की मैं हूँ इस वक्त, I'm telling you, you would enjoy the walk. It's like being surrounded by this beautiful lake near Parvorum city. There's this little village. It's surrounded by palm trees, and that little walk on that road, which is not very wide but not crowded either, is something that you'll never forget. Just when I thought the walk on the creek was over, I was just about to tell Jaden, Jaden, I think it's time for us to go back to the hotel because it was, about to get dark. Just then, we met this very sweet villager जिन्होंने हमें ऑफर किया अपना हट दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि हम व्लॉग बना रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द ऑथेंटिक गोवा, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट रिफ्यूज दैट। सो वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हट। हम गोवा में शूट कर रहे हैं और आई थिंक ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है जहाँ सामने से आपको बोला जाता है आओ घर आओ, एंड हमें देखो कितने अच्छे हम राही मिल गए। का नाम क्या है? नीलेश है मेरा। नीलेश। हाँ, ये मेरा घर है और मेरा नाम है नीलेश पोल। नीलेश पोल। आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? 80 साल, ऐसा 80 प्लस, पूरा 80 नहीं तो 100 साल। 100 साल। They've been staying here for more than 100 years. तो ये मेरे बाप ने बनाया था, ये ऐसा ही, अभी तक कुछ हाथ भी नहीं लगा है इसको। Figueiredo Museum. Goa's most influential family for over 400 years. Built in 1590, the Figueiredo mansion predates the Taj Mahal by decades. It was designed by Jesuit priests from nearby Recol Seminary to accommodate a newly converted Goan family, the Podiyars, who took the name Figueiredo. The house's sumptuous interiors stands in studied contrast to the natural beauty of the paddy fields and coconut trees that surrounds it. In the 18th century, with the family's rise in power, the house was suitably augmented to achieve its current propositions. The addition is still known as the new house.
Yoga Setu Bridge, a distinctive bridge serving as the entrance and connection to the promenade from DB Road near ESG to Miramar Beach along the river coast. The bridge is built over the Santa Ynez Creek branch that is connected to the Mandovi River near the Children's Park. The bridge features Surya Namaskar, which is the sun salutation, poses on either sides of the arches. Taj Goa has private beach. Spread across 56 acres of landscape gardens, the Mediterranean-style Taj Exotica Resort and Spa sits along a private beach overlooking the Arabian Sea. Located on the southwest coast, it sprawls across 56 acres of lush greenery with the Arabian Sea within calling distance. You know, Taj is one of my favorite properties to stay around the world, and Taj Exotica Goa is definitely on the top of the list. The way it is situated on the private beach, the quiet, the peace, the luxury, the view, everything comes together beautifully. And more so, I really wanted to spend time with Jaden. And I got that in peace and luxury. Jaden and me, we went cycling, we went swimming. He also taught me how to play golf. And the time that I spent with him, I don't think anything can be more healing than that. Honestly, I was not done. I was very sure that I can show more to Jaden, and Goa had so much more to offer. So somebody told us that Ashvik Vintage Car Museum एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है कार्स की, और हमें बोला गया कि आप जरूर जाके देखिए. Jaden ने जैसे ही कार्स का नाम सुना, he got excited, and of course there was no turning back. So we drove down. From my hotel, it took me about an hour to reach there. And the moment I got out of the car, honestly, I was very disappointed because the place, the building looked very old and worn off. And I was like, really? These vintage cars will be inside? But the moment we went inside, everything changed. The magnificent collection of vintage cars will blow your mind. The cars right from the time of World War to the cars that are actually signed by Mario himself. The Austin RP 4-seater standard saloon came with deluxe sunshine roof and smoker's hatch, introducing a new sophistication and demonstrated that sensible transport didn't have to be boring. Invented by Carl Benz in 1886, the Benz patent Motorwagen is widely regarded as the world's first automobile that is designed to be propelled by internal combustion engine. 1886 to 1883 was the production. Only 25 were built, Jaden. Only 25 of these. Production 1935 to 1948. Over 50,000 cars produced. DKW Munga. The name Monga, which is Munga, translates from a German phrase as multi-purpose universal off-road car with all-wheel drive. The vehicle has great stamina and was bought by German border police and various foreign military formation with NATO. Production 1956 to 1968. Slightly larger than its predecessor, as in the previous one. Yeah. This car was used in Hollywood movie The Seawolves, shot in Goa, starring Gregory Peck, Roger Moore and David Niven. It will let you walk through history, and trust me, there was nothing but history, history, history written all over the place. I want a car like this, Jaden. Get me a car like this. Please buy me a car. Like this, Mama. Look at the car. Like, who wouldn't want to drive a car like this? How come we don't have such cars? I think this idea is so cool. So while in Goa, I know it's a very small place, very offbeat place to come, but
I would highly recommend this place for the kids to live the vintage car era, to live the history behind it. And it's an experience that you really need to give your kids. You know, this whole color combinations, this whole the whole idea of cars standing here from 1930s, 1910s, it's just so beautiful. So I would very, very strongly recommend that you pick up your kids, plan Goa while you party, also plan a place like this. I'm so happy that we made it here. Bigfoot Museum. This is a museum and a theme park based in the South Goa, India, village of Lautolim in the sub-district or taluka of Selset. It was founded and is run by the artist Mahindra Alvarez. This privately run venture recreates a Goan village in miniature that seeks to depict what the local rural life was in the past, over a century ago. So colorful. Jaden, what do you think about this? It looks like a festival. What festival though? Come on, let's find out. It's a folk dance. It's a Goan folk dance. The museum is located in an open-air setting. So you made the sculpture of Mirabai, really? Yeah, the stone? Of the single stone. So what was the inspiration? How did it come to your mind? Basically, Goa was sold for different things. Like one was the beach, or the Hindi movies mostly showed a Goan as a drunk. There was no culture as such. So everybody thought Goa doesn't have anything, but you come here just to drink and have fun, go back. So my thought was, why not we show the actual culture and show that there is something more to Goa. So the whole thing is done in Greco-Roman art. The influence of Buddha's statues in something like 200 BC, where this art was shown. I try to incorporate that in Goan theme. But in 30 days you finished the whole thing. What did you use? A hammer? Hammer and the chisels, that's it. My God, that's not easy, yeah? This is amazing. So when was this? When did you do this? We did it in 1994. So we are completing 30 years now. Wow. And what's your favorite corner of this whole place? What is your personal favorite? Next to the sculpture. Next to the sculpture, because it depicts your hard work also. Hard work, and that was the beginning of the entire project. So the thought was, nobody was going to come to see only the sculpture, but let's have something more, and that more kept on growing. But have you also done all the sculptures of, like we just saw Gandhi ji and all of them? Have you done that as well? The left-handers, that was with someone else, but a little of touches are there. But these other ones in the village, most of them are mine. When did you start this museum? 1995. 1995. But you know, very rightly said, even me as a college kid, I used to come here just to have fun and do our thing and go back. As a mother, coming here this time and educating the audience also and showing Goa in the right light, it is so much full of culture and history, and it's beautiful. So here we are, we've just finished the tour of Bigfoot. How did you like it, Jaden? It was nice. Now you know a little bit about Goa, a little more about Goa than when we had come here. Yeah. You know, जब भी हम गोवा सोचते हैं, हम पार्टी या शॉपिंग या वाटर स्पोर्ट्स यही सोचते हैं. जैसा मैंने आपको पहले एपिसोड में दिखाया कि इतने अमेजिंग फोर्ट हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, उनको आप एक्सप्लोर कीजिए. लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको एक अमेजिंग सी टिप दूंगी. आप अपने बच्चों को सुबह 7 बजे मोबोर बीच लेके जाइएगा. So Mobor beach is situated in the south of Goa. It's a beautiful beach जहाँ पे water sports भी होते हैं and everything that you can imagine on a beach. But the special part is सुबह 3 बजे गोवा के बहुत सारे fishermen morning में fish करके 7 o'clock तक shore पे बहुत ही सारे हजारों लाखों fish इकट्ठी कर लेते हैं, which are literally just lying there on the beach.
And that is a sight to watch, to see how much effort they put to get the fish on your plate. The fishermen are busy. There is a hustle bustle in the morning. आप वहाँ पे फिश को लोड होते हुए देखोगे, वहाँ पे नेट से स्ट्रगल करते हुए उन फिशरमैन को शोर पे फिशेस को खींचते हुए देखोगे. That is a sight Jaden enjoyed probably the most. And literally when I sat in the aeroplane and I asked him what was his favorite part, trust me, he said Mobor Beach, because he loved just watching the hustle bustle of the fishermen. चाहे वो मारियो की डिपिक्शन हो फिशरमैन को बहुत ही स्वीट तरीके से दिखाने की उनके कार्टून्स में, चाहे वो रियलिटी में देखना हो, I'm telling you, the effort that they put is worth watching 7 in the morning. तो next time आप गोवा जाएं, please Mobor Beach जाएं और सुबह 7 बजे अपने बच्चों को उनकी मेहनत से रूबरू जरूर कराएं. खामोशियों में जी लिए अब आदतें सुधार ली. गुफ्तगू है हर तरफ, कोई सुन रहा पुकार सी. खामोशियों में जी लिए अब आदतें सुधार ली. गुफ्तगू है हर तरफ, कोई सुन रहा पुकार सी. So Daljit, why Goa? Because lot of memories of happy days. मेरे चाइल्डहुड में, कॉलेज डेज में बहुत मस्तियाँ की हैं गोवा में, और मुझे गोवा में अपने आई थिंक बेस्ट लाफिंग मोमेंट्स याद हैं, जहाँ बहुत गिगल किया, बहुत मस्ती की, बाइक पे निकल जाते थे. आई वॉन्टेड टू कम टू माई हैप्पी प्लेस. दैट्स इट. कोई सुन नहीं रहा पुकार सी. Now, how are you feeling? शून्य. I think I've come to a point where बहुत ही जीरो और एक numb feeling है. And I think this is where I want to begin everything in my life. Whether it is finding happiness, whether it is wanting to trust again, whether it is anything, I think I've come to a zero. So to start again. चाह गले से लगना, मांगा ही क्या था हमने, खुद को बिखरते Because we have seen lots of ups and downs since last many months. क्या कुछ बीता कुछ आखिरी के कुछ महीनों में कैसे थे लाइफ के? आपने बहुत कुछ देखा और सब आपके साथ थे और सब आपके साथ चल रहे थे, तो हम कुछ जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बीता कुछ आखिरी के कुछ महीनों में. पिछले कुछ महीने नहीं, आई थिंक पिछले कुछ साल मेरी जिंदगी के बहुत लाइफ चेंजिंग साल रहे, जहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि फिर से मैंने अपने दिल की सुनी और दिल की नहीं सुनी थी. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब आप सिर्फ दिल से काम करते हो अपने लाइफ में तो ठोकरें ज़्यादा खाते हो. बट ये भी तय है कि क्योंकि मैं दिल से ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे प्यार भी बहुत मिलता है, क्योंकि आई थिंक जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, कोई नहीं आता. लेकिन मेरे कुछ महीने स्पेशली जनवरी से बहुत शॉकिंग रहे. अभी भी आई थिंक एक डिनाइल में हूँ. आई नो आई हैव टू मूव ऑन एंड एवरीथिंग, बट वो डिनाइल है. यू नो कई बार नहीं होता, लगता है कि यार कुछ चाबी घुमा दे और या कुछ टर्न करके पीछे ले जाए उस टाइम. आई विश आई कुड रिवाइंड एंड प्ले इन अ डिफरेंट वे. अगर अकेली होती तो शायद थोड़ा और आसान होता, लेकिन एक बच्चे के साथ ये सफ़र तय करना फेयर नहीं था. एंड आई जस्ट थिंक दैट एक वाइफ हारी, लेकिन उससे ज़्यादा एक माँ हारी. एंड हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ. आई विल बाउंस बैक, पर इट इज़ नॉट ईजी. एंड दैट्स व्हाई गोवा. एंड
इसीलिए डिसाइड किया कि ट्रैवल ब्लॉग शुरू करती हूँ ताकि कहानी फिर से शुरू करें। मेरा घर था जहाँ मैं 9 सालों से रह रही थी और छोटी छोटी चीजें बनाई थी उस घर में, तो पूरा घर अपनी अभी कोई भी घर नहीं है, लेकिन फिर शुरू करेंगे। और इस बार क्योंकि सूटकेस से शुरुआत हो रही है तो मैंने सोचा क्यों नहीं सूटकेस को उठा के दुनिया घूमते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और मेरी फैमिली भी सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई थॉट कि अब बहुत जल्दी नहीं करूँगी ऑफ गेटिंग अ हाउस, क्योंकि मुंबई में रेंट पे घर मिलना बहुत आसान है, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहती इस वक्त। तो अपना सूटकेस उठाऊंगी, अपनी सोल को उसमें बांधूंगी और अपनी कहानी फिर से लिखूंगी। आई विल राइट अगेन। एंड बहुत लोग हैं जो टेक टू क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू फील अबाउट टेक टू। सो आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि टेक टू एक हार नहीं है, यू नो, इट इज अ साइन ऑफ माय स्ट्रेंथ। मैंने वापस हिम्मत की 9 साल बाद। इट वाज नॉट इजी, लेकिन टेक टू को मैं एक हार नहीं मानती, टेक टू को मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ। एंड अब मैं आगे बढ़ूंगी। मुझे मेरे बच्चे को हील करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। पत्थर पे होने लकीरें पत्थर। Since last how many hours it's going? 8 hours. 9 hours. Complete 9 hours. Non-stop. Means whole night. Whole night. It's been interesting 9 hours of pain. Well, his art is very good. Very good. I'm so happy that I chose him. You know what it depicts? Depicts my life. Take two was my strength. Camera is my reality. And you are everything to me. So it's literally my life in a canvas. खामोशियों में जी लिए, अब आदतें सुधार ली, गुफ्तगू है हर तरफ, तुम सच सुनोगे या नहीं। चाहा था गले से लगना, मांगा था क्या ही हमने, खुद को बिखरते देखा, तोड़ा था क्या ही हमने। गुफ्तगू है हर तरफ, लगे जिंदगी उधार सी, गुफ्तगू है हर तरफ, मुझे सच की है तलाश सी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी